Hi, how are you all? Hope you guys are doing well. And by now, I hope that you have understood the two stories, The Gold Watch and An Astrologer's Day. Since they are just four stories, I thought let me just finish these four stories with you. And then we will start with The Merchant of Venice, that is drama. Uh, Coming back to our short stories, today I will be teaching you or summarizing the story, The Lost Child, for you. And The Lost Child, as you can understand through the title of the story, definitely the story revolves around a child who was lost in a fair. फेयर का मतलब है मेला. तो जब स्प्रिंग टाइम होता है, जब बसंत ऋतु होती है, तब गांव वगैरह में काफ़ी मेले लगते हैं. और ऐसे ही एक मेला है जहाँ पे ये पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, अपने बेटे को घुमाने ले जाते हैं. एंड he is a child of 5-6 years, so he's extremely naughty, extremely happy, extremely excited to go to the fair. And he's uncontrollable. His happiness knows no bound. और उसको कंट्रोल करना, उस बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. अब जो इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो पापा हैं, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट मिजाज के हैं, जो उसकी किसी भी ख्वाहिश को या रिक्वेस्ट को नहीं मानना चाहते हैं. ऑन द अदर हैंड, द मदर ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन द father and the son. So the story revolves or opens up with with 2 pages of description of nature, about the village, about the place where the mela is taking place. And the beautiful description, once you when you read the text, you will realize that you will realize as if you are you will think as if you are there. The description is so realistic. और जो राइटर है, उन्होंने समझाया है कि कैसे जो स्टोरी खुलती है तो हम एक गांव में हैं, और वो जो गांव है उसमें बीच में एक सड़क है जहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सरसों के खेत हैं, और खूब हवा चल रही है तो वो खेत लहरा रहे हैं. And there's a beautiful smell of the mustard flowers and the mustard seeds that's engulfing the atmosphere out there. There are butterflies, there are rabbits, there are little birds who are also jumping along with the child from flower to flower, from one plant to the other. And it gives a beautiful aroma as well as a beautiful picturesque व्यू ऑफ द विलेज. और चलते जा रहे हैं, और ये बच्चा बार बार अपने मम्मी पापा का हाथ छोड़ के आगे चले जाता है, और उसको बार बार कंट्रोल करके मम्मी बार बार बुलाती है, बेटा कम बैक सन, कम बैक, डोंट लीव माई हैंड, यू हैव टू स्टे हियर. बट दिस लिटिल बॉय, यू नो, हम लोग भी शायद जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसी हैप्पीनेस में हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. एंड वी विल ऑल्सो वॉन्ट टू move from one place to the other, because I'm sure we are quite done with living at home for such a long time. All the same, we all are doing a great job, so don't worry about that. Coming back to the story, so this boy, उसके मम्मी पापा के साथ वो जा रहा है, and he goes, and then जहाँ पे मेले का गेट है, एक बड़ा सा गेट है, और वहाँ पे बाहर एक बड़ा सा पेड़ है जहाँ चारों तरफ बैठने की जगह है. So people are sitting there and relaxing for some time. Even this child's parents go and sit there, and the child is so excited कि जब वहाँ बैठा होता है तो पेड़ों पे से फूल नीचे गिरते जा रहे हैं, तो वो उन्हीं को उठाने लगता है. फिर उसके पास एक बग भौरा होता है, वो उसके पास इर्द गिर्द उसके घूम रहा है, उसको भी वो पकड़ना चाह रहा है. ही इज़ सो excited about it. And there's
a group of dragonflies जो टिड्डा जैसा कीड़ा होता है वो, so a group of dragonflies are hovering over him and he is so excited कि वो नेचर के इतना करीब है वो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाइज हो, चाहे वो तितलियाँ हो, चाहे वो फूल हो, he is excited and he wants to be one with them. So this beauty, when you read the text, you will yourself, you will feel as if you are there in person. The way the writer has described these beautiful things. So eventually वो enter होता है मेला में, and as he enters the gate he is so excited he doesn't know what to do. और गेट में एंटर होते ही उसके पास उसके जैसे ही वो अपने साइड में देखता है तो ही सीज अ मिठाई वाला हु शाउटिंग आउट कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, एंड ही सेज कि मुझे बर्फ़ी बहुत पसंद है, ममा आई वांट बर्फ़ी. एंड हिज फादर सेज दैट देयर इज़ नो नीड टू बाय बर्फ़ी, this is the first shop, this is just the beginning, let's go ahead and see what else is there and perhaps we will find something interesting, so we'll buy that. So उसका मुंह छोटा सा उतर जाता है क्योंकि उसको बर्फ़ी नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा सा आगे जाता है. When he goes ahead he sees a hawker who is making garlands out of gulmohar plants and gulmohar flowers, and he wants that. उसको वो बहुत ज़्यादा attractive लगते हैं, and he says कि in his mind he says I want that flower, I want that garland, but now he is scared of his dad, so he knows कि उसके पापा उसको नहीं दिलाएंगे, तो वो अपने मन में ही सोच लेता है कि अगर मैंने मांगा कि ये माला मुझको चाहिए तो मेरे पापा मुझको बोल देंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है ये माला वाला ख़रीदने की, आगे चलते हैं. So he just keeps that feeling in his heart and he moves forward. Next shop जब आती है, that is a man who is holding different colored balloons, blue, white, yellow, red, pink, and I know some of you girls also get excited seeing a balloon. So he's just a little boy. So when he sees the balloons, he's excited. He wants them somehow or the other, and again that feeling of wanting those balloons fills him, and he is about to ask, "Can you buy me those balloons, Papa?" And then in his mind, he gets the answer, "You're too small for balloons. Balloon लेके क्या करोगे? तुम तो बहुत छोटे हो, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की." And again, remember, he is just thinking these answers in his mind. Only the first time when he wanted barfi, that time his father refused. But all the other times when he'll go to different shops and he'll want those things, he will assume that his father will refuse him, will never buy those things, or will never listen to what he wants, or never adhere to his request. Okay? So he says that अपने मन में सोचता है कि अरे अभी बलून मांगूंगा तो पापा कहेंगे तुम बहुत छोटी हो बलून से खेलने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं. So again they now move forward. Now they are in the middle of the mela, and you can understand that they will be seeing many different things. So थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उनको एक जगलर मिलता है, जो बॉल्स से खेलते हैं, 3 to 4 balls at a time. और उसी के पास वो एक आदमी था जो सांप का डांस दिखा रहा था बीन बजा के, तो उसको वो सांप का डांस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. एंड ही सेज दैट अगेन इन हिज माइंड ही सेज अगर मैं बोलूँगा कि मुझे ये बीन ला के दो या ये फ्लूट ला के दो, फिर कुछ बहाना मार देंगे और कुछ नहीं देने वाले हैं मुझको. सो अगेन वो सर लटका के, और उसकी मम्मी फिर कहती है कि बेटा हाथ पकड़ के चलो, थोड़ा आगे चलो, संभल के चलो. And he is like, though he is excited to be there, but he is sad that he cannot
get those things, what he wants from his heart. And you know how little children are. Whenever they go out, उनको हर चीज़ चाहिए, चाहे वो खेलने की चीज़ हो, चाहे खाने की चीज़ हो. And it's not possible for us to buy them everything. And this child is like any other normal child who wants everything that he's seeing in the fair. खैर, अब आगे चलते चलते they come to a place where his desire to want that thing overpowers him. जब वो आगे जाता है तो वो एक झूला देखता है, okay, roundabout, and this time he just cannot control his feelings. He wants to ask his dad, I want to go and sit on that झूला, I want to go on that roundabout. And उसके मुंह से ये जो ख्वाहिश थी उसकी वो निकल जाती है. And he says that, Dad, I want to sit on that झूला. But to his surprise, there's no answer. So he looks around and he cannot see anything. And again he looks around, and then he shouts for his mom and dad, hey, Papa, kahan hai? Mummy, Papa, where are you? Kahan ho? And he gets no answer. So he's shouting out to them. This thought comes now. It's settled in him that he is lost. Eventually he understands that he cannot see. It's like his eyes are moving everywhere in that mela. He's trying to find out where his parents are. He's trying to call out to them, Mom, Dad, Mother, Father, where are you? And he gets no answer. And then it dawns on him that he's actually lost. और वो रोना शुरू कर देता है. And poor child, he's crying bitterly. और उसी में वो भागना भी शुरू कर देता है कि कहीं उसको शायद मम्मी पापा चिल्लाएगा तो मम्मी पापा मिल जाए. And he's shouting out, Mother, Father, Mother, Father, and he cannot find his parents. तो इवेंचुअली उसको सामने एक बड़ा मंदिर दिखता है. And lots and lots, like people in hundreds and thousands are thronging to visit the temple. और उसको ये लगता है दिमाग में कि शायद मेरे मम्मी पापा भी मंदिर में होंगे. So he starts running towards the temple, and as he's about to climb the stairs of the temple, there's such a lot of rush over there, lots of people. और सब वो इतना छोटा सा है, सब इतने बड़े बड़े लंबे लंबे लोग हैं, सब धक्का दे रहे हैं उसको, गिर जा रहा है, नाक बह रही है, धूल उड़ रही है, ऐसे करके पोस दे रहा है उसको, आंसू भी गिर रहे हैं, तो मुंह भी उसका काला काला हो गया है. एंड एवरीथिंग लाइक इट्स अ बैड स्टेट. तो एक आदमी को तरस आता है तो उसको उठा लेता है गोद में, उसका आंसू आंसू पोंछता है. एंड ही सेज, व्हाट हैपेंड, वेयर आर योर पेरेंट्स? But he starts crying more bitterly and more loudly. And again that man, he takes him away from the temple to a place where he can understand what this boy is trying to say. And again he says, where are your parents? Where's your father? Where's your mother? And the moment he asks the child all the more starts crying loudly. I want my mother, I want my father. more loudly, जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, और रोना शुरू कर देता है. देन उसको, क्योंकि वो इतना बिटरली रो रहा था, और उसको चुप कराने के लिए वो जो आदमी था उसको ले जाता है झूले वाले पे. And he says, you want to sit on the swing? I'll take you there and we can go on the roundabout and you will feel happy about it. And he says, no, I don't want to go and sit on the swing. I want my father, I want my mother. Then ironically जो वो आदमी होता है वो उस लड़के को वो सेम स्पॉट्स पे ले जाता है. झूले वाले के बाद वो सांप वाले के पास ले जाता है, बोलता है तुमको ये फ्लूट चाहिए, तुम खरीद लो, मैं तुमको देता हूँ, चुप हो जाओ. बट ही ओनली शाउट्स, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. देन ही गोज टू द बलून फेलो. You want a balloon, you'll feel nice. And he's crying bitterly, no, I want my father, I want my mother.
and then he goes to the बर्फी fellow and he says कि चलो बर्फी खा लो, चुप हो जाओ, कुछ खा लो, तुमको अच्छा लगेगा. And he just keeps shouting, I want my mother, I want my father. So the story abruptly ends over here, but it has a great message for us. It's absolutely like the psychology of a man. When we don't have things, we want them badly. We want them, we wish them कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता. और जब हमको मिल जाता है वो चीज़, तब हमको उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती है. In this particular case, he has his parents, but he wanted other things. He's a child, he's a little baby. But you all are grown-ups, and there'll be many things that you also want. Sometimes you want scooty, sometimes you want a mobile of your own, sometimes you want a good dress of your own, and boys may want bikes or laptops, or there are 1,000 things which the young generation wants. I don't want to stay here, I want to go out and study out. So, and there are times when our parents disagree with what we want and we do not get them, and we get angry at them, we misunderstand them, not realizing that they might be having some genuine problems because of which they are not able to fulfill our needs. But all the same, जैसे छुट्टियाँ हमको चाहिए, जब हम लोग रोज़ स्कूल जाते थे तब हमको लगता था काश कल छुट्टी हो जाए, काश कल छुट्टी हो जाए. और अचानक से जब अनाउंसमेंट होता था प्रिंसिपल्स ऑफिस से that tomorrow is a holiday, then we would hear a shout in the whole school, and the whole school would echo with wow or clapping sounds of the students. And fortunately, when we are having these holidays now, we want to go back to school, we want to go back to office, we want to see each other, we want to meet each other. There were times when we couldn't, there was no time when we and our parents sat together and talked and cooked and ate and saw TV together. ऐसा समय पहले नहीं मिलता था, हम लोग को इतने बिजी रहते थे हम पढ़ाई में, काम में. अब है वो वक्त, और अब हमको वो वक्त नहीं चाहिए. इट इज़ आयरॉनिक अगेन, जैसे वो लड़के को वापस वो उन्हीं जगहों पे ले जाता है जो चीज़ें उसको बहुत डेस्परेटली चाहिए थी, वैसे ही हमको भी समय अब उन चीज़ों के पास ले आया है कि मम्मी पास में बैठी हैं, पापा पास में बैठे हैं, हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली maybe some people are loving this situation, some people are not. All the same, I can only say that let us pray for things to get normal, but let us also respect what we have. जो हमारे पास है उसको हम उसकी इज्जत करें और उसको वैल्यू करें, क्योंकि ये बुरा समय है, ये तो गुजर जाएगा, लेकिन जो वक्त है जो आज हम अपने अपनों के साथ बिता पा रहे हैं वो पता नहीं फिर मिले ना मिले. So on that note, stay happy with your family, stay safe, and study and enjoy. Bye.